Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 2 unit 2 lesson unit 5 lesson 2 words and phonics. First is air, AIR, EAR, ARE, air, air. Its sound is air. First is air, fair, hair, stairs, pair, chair. Where, bear, tear, pear. Square, hair, care, share. ठीक है, इन तीनों की सेम साउंड है AIR, EAR, ARE, air. Old, told, gold, old, hold. HEAD, head, bread, thread, leather, weather. Use air or air. The sound is the same. The sound is the same. Look at this picture. This is Tom's little sister. She has fair, H के बाद AIR, hair. She has fair hair, H AIR. She is sitting on the STAIR, S, stairs. दोबारा AIR इधर लगेगा, airs बन जाएगा stairs. She is WEAR आएगा, wearing. अब PAIR, pair of trousers with SQUARES, squares on them. She has a tear, TEAR, tear in her trousers. She is holding a teddy bear and eating a pear. BEAR, PEAR. I don't care, CARE, about the tear, TEAR, she says. ठीक है. Next question number D. Match the words that have the same meanings. Woman mean lady, small mean little, lovely mean beautiful, story mean tale, hello mean hi. पेयर मीन्स टू, पेयर मीन्स टू. ठीक है, जो दो चीज़ें होती हैं उसको क्या कहते हैं, पेयर. इन योर नोटबुक राइट अ पेयर ऑफ डैश फॉर ईच पिक्चर ऑफ अ पेयर. ये पिक्चर आपको देख रही हैं, आप सारी पिक्चर्स देख रही हैं, इन सारों को आपने करना है. सर्कल द वन दैट इज़ नॉट अ पेयर. फर्स्ट आपने जो अपनी कॉपी पे लिखना है वो है अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ पेयर ऑफ शूज़, a pair of shoes. उन्होंने बोला सर्कल करना है, कोट का पेयर नहीं होता है, इसको आप सर्कल कर देंगे. a pair of gloves, a pair of gloves, a pair of trousers, a pair of scissors. ठीक है. Today we have completed page number 27 of English book. आज के लिए यही काम है. अल्लाह हाफिज़.